Hello dear learners, this is Namit for your science instructor, and in today's video we are going to start a new chapter which is about role and coordination, the chapter number 7 from your NCERT book and the second chapter from your biology. So let's start with the chapter. Okay, so now we are going to start the new chapter, that is chapter number 7. It's related to control and coordination. So, my dear learners, by the name of the chapter, we can understand that this is something related to control, right? तो अगर हम देखें, we have brain, and our brain is controlling all other parts of our body, right? Our hands की जो movement हो रही है, legs की movement है, और any other movement of even we are when we are speaking, right? Even that moment we are walking, right? All these things are controlled by brain. How? For example, अगर हमें कभी हाथ के ऊपर चोट लग जाए, right? किसी गर्म बर्तन को टच करने से हमारे हाथ पर अगर चोट लग जाती है, जलन होती है, एंड दैट सिग्नल विल बी सेंड टू ब्रेन को वो सिग्नल सेंड किया जाएगा, और ब्रेन इन रिटर्न क्या करेगा? देखो, इधर से हमने सिग्नल सेंड किया, एंड इन रिटर्न ब्रेन जो है वो एक एक्शन के लिए सिग्नल भेजेगा, एंड व्हाट विल बी दैट एक्शन? कि वो जो गर्म बर्तन है उससे अपना हाथ हटा लो, राइट? सो दिस इज कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल मीन्स जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है सभी बॉडी पार्ट्स को, सभी सिस्टम को, एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम एंड द ब्रेन, right? Not only the brain, the whole of the CNS and PNS will be learning about in this chapter. So let's have a brief introduction about the topic. All the organisms, जितने भी living organisms हैं, they respond to change in environment. All the living organisms respond to change in environment. राइट इसके हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? विद द चेंज ऑफ सीजन, लाइक जब विंटर्स होते हैं, विंटर्स के हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंज इन एनवायरनमेंट? वी यूज टू वेयर सम वुलन क्लोथ्स एंड कैरी some of the things that can give us heat, right? And when there are summers, what we do, we wear some cotton cloths or some clothes in which we feel comfortable, right? Which can prevent us from the heat. So these are some of the external responses, right, to the environment, but our body also respond to some of the changes. And the change in the environment, this was our first point. So second point is the change in environment. कोई भी ऐसा change जिससे हमारी body उसको react कर रही है, respond कर रही है, that change is called as stimuli. The change in the environment, कोई भी ऐसा change हो environment में जिससे हमारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिमुली. To which organisms respond and react are called as stimuli. राइट? सो हम इस बेसिक टर्म के बारे में बहुत ज्यादा इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे. विल नॉट बी सेइंग द चेंज और the respond or react, will not be using these terms, but we'll be using stimuli or stimulus.
ओके, सो वो हमने क्या क्या इसमें बोला है कि कुछ ऐसे चेंज, और वो चेंज क्या हो सकते हैं? द चेंज मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, it may be in the form of heat, maybe in the form of coldness, sound, smell, touch, etc. राइट, सो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्ड करेंगे. बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू दिस सिस्टम. बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. But in different manner. जो एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक रिस्पॉन्ड है किसी चेंज के लिए, किसी स्टिमुली के लिए, वो होता है. मींस प्लांट भी उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस चेंज के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, एंड एनिमल्स भी. बट इन दोनों का रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन एनिमल्स, राइट, विच इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग्स. तो एनिमल्स के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या सिस्टम होता है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट. तो इधर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए देयर आर टू सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. So here we have two system and the endocrine system. So सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. तो जो नर्वस सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. Control and coordination in nervous system are provided by nervous and muscular tissue. Okay, तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक रिसेप्टर. तो रिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं? रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स. These are the specialized tips of some nerve cells
ये नर्व सेल की कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट, that detect the information from environment. इसमें we can also think of the 5 important sense organs जो सेंस करते हैं. You all must be aware of this. ये तो हम सेकेंड थर्ड क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं. Eyes, ears, tongue, nose, and skin. Right? So now we are going to start with a very important topic, that is neuron. So the neurons, it is the structural and functional unit of nervous system. It is the structural and functional unit of nervous system. If any time the neuron, any question related to neuron is asked to you, the very first point you are going to mention here is that it is the structural and functional unit of nervous system. Okay, it is very important part of nervous system, and neurons are the longest cell in the nervous system or in the whole body. So अभी हम इसकी functioning के बारे में पढ़ेंगे. Functioning of neuron से पहले let's first discuss about the main diagram. So neuron का diagram कैसे होता है? This is the nucleus. Then here we have some dendrites like this, and from here we can say the main body of the neuron starts. This is the axon part, and which then ends at the terminating points, right? So this is the structure of the neuron. It is very branched. Here I'm not showing that much branches, but just to make you understand the structure of neuron, I have drawn this diagram here. So here used to be like some terminal points like this. Okay, so इसकी जो dendrites होती हैं, these are very branched. Right? इसके बहुत ज़्यादा branches are there. So we are just going to understand the main parts. So I'm not going those much branches. I'm just drawing the rough diagram here. So you people can understand the structure of neuron, right? Yeah. So let's now label it. These hair-like structure, ये जो कुछ झाड़ियों जैसे structure लग रहा है, or we can say the hair-like structure, these are dendrites. Okay, so these are dendrites. This is nucleus. This very portion, this is axon part. This is the cell body.
Here it is nerve ending. ओके सो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दीज आर सम ओके सो बिफोर दैट ये जो हमारे पास एक्सन पार्ट है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से माइलिन शीट लगी हुई होती है विच प्रोटेक्ट्स इट राइट लाइक दिस ऑन बोथ द एंड्स. सो हमारे पास ये जो गैप है यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है एंड दीज एंड्स आर कॉल्ड एज नोड्स. Okay, so this was about the structure. तो इसके हमने अगर न्यूरॉन के मेन पार्ट्स लिखने हो, which are the main parts of neuron, then we can here write parts of neuron. तो कौन-कौन से पार्ट हमने पढ़े हैं न्यूरॉन के? We have learned about the very first is dendrite. We had then learned about cell body. The third one is axon. The fourth one is the nerve ending. These are main points, or you can also write some lines about the nodes, right? This is up to you. So हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है? The information is acquired by the dendrite. सबसे पहले डेंड्राइट के पास इंफॉर्मेशन आती है in the electrical impulse form. उसके बाद में जो एक्सन है it is the longest fiber and it transmits the electrical impulse. ये जो electrical impulse होती है उन्हें transmit करता है to the cell body. So डेंड्राइट्स ये जो हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं ये पास ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी. सेल बॉडी से हमारे पास इंफॉर्मेशन जाती है एक्सन के पास. एक्सन क्या करता है? दे ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू नर्व एंडिंग. जो नर्व एंडिंग होती है हमारे पास वहां तक इंफॉर्मेशन जाती है एंड फ्रॉम दैट नर्व एंडिंग टू द नेक्स्ट एक्सन टू द नेक्स्ट डेंड्राइट. राइट यहाँ पर नेक्स्ट डेंड्राइट्स होंगे कुछ तो नेक्स्ट डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी एंड द सर्कल कंटिन्यूज अंटिल द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. राइट ओके सो नाउ वी हैव फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन की फंक्शनिंग कैसी होती है? राइट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन. तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाती है डेंड्राइट के पास. ओके फ्रॉम द रिसेप्टर टू डेंड्राइट. एंड दिस इम्पल्स जो हमारे पास इम्पल्स है ये ट्रेवल करती है फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी. From cell body it goes to axon. From axon to it goes nerve ending. नर्व एंडिंग के बाद ये जाती है सिनेप्स के पास. We are going to learn about synapse in the next few slides. So synapse basically क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया suppose यहाँ पर हमारी जो नर्व एंडिंग है suppose these were the nerve endings right somehow like this. तो ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है लास्ट में यहाँ तक आएगा एंड फ्रॉम देयर स्टार्ट्स अ न्यू डेंड्राइट. यहाँ से एक न्यू डेंड्राइट स्टार्ट हो जाती है. अगेन हियर वी हैव सेल बॉडी एंड देन द न्यू एक्सन.
So don't go into the diagram, just understand the main concept. So this is something axon we have, and again here we have the nerve endings. ये जो nerve ending है again एक dendrite के पास start होगी. So the space, the gap between this nerve ending and dendrite is known as synapse. Okay. So synapse से जो है हमारे पास नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाता है. न्यूरॉन में कहाँ पे जाता है? डेंड्राइट. डेंड्राइट से अगेन सेल बॉडी, एंड दिस सर्कल कंटिन्यूज until the information is passed on to this circle continues, right, until this information is passed on to central nervous system. Okay, so now let's have a look at the definition of synapse. Okay, here we go. Synapse. So what is it? Let's have a look at it. Okay, it is the gap between the nerve ending of one neuron, एक न्यूरॉन की nerve ending and dendrite of other neuron. So synapse हमारे पास क्या है? हम जैसे suppose करते हैं this was our axon. Just the very rough sketch here I'm going to draw just to tell you about the synapse कि हमारे पास synapse क्या होती हैं. Okay. सो यहाँ पर हमारे पास जो है नर्व एंडिंग्स होती हैं, राइट. तो इसमें से हम कोई भी नर्व एंडिंग कंसीडर कर लेते हैं, लाइक वी कैन कंसीडर दिस वन. यहाँ पर क्या है? हमारे पास अगेन एक डेंड्राइट स्टार्ट हो रहा है, राइट. फ्रॉम हियर दिस डेंड्राइट इज स्टार्टिंग. ये हमारे पास एक फर्स्ट न्यूरॉन था और ये जो है हमारे पास सेकेंड न्यूरॉन है. तो किसी एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे जो हमारे पास न्यूरॉन है उसका जो हमारे पास डेंड्राइट है, like let's try a rough sketch of this neuron here. So yeah, this is the axon. Okay, so एक पार्ट का नर्व एंडिंग एंड दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट में जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस बाय डिफरेंस आई मीन टू से द गैप, जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस डिस्टेंस, राइट. ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स. Let's further. Now we are going to learn about very important topic, that is reflex action. Okay, so reflex action हमारे पास क्या होता है? Reflex action is the quick, sudden and immediate response. Quick, sudden and immediate response of the body to a stimulus. इसकी हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, withdrawal of hand on touching hot object. अगर ओके, सो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कुछ ऐसा एक्शन जो बहुत ज्यादा क्विक हो, सडन हो और इमीडिएट रिस्पॉन्स हो किसी भी एक स्टिमुलस का, मीन्स किसी भी एक चेंज का, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गर्म बर्तन को हाथ लग जाए तो हम फटाफट से अपना जो हाथ है पीछे हटा लेते हैं. सो दैट एक्शन इज रिफ्लेक्स एक्शन. Okay, so now we have another definition, that is stimulus. Stimulus is
ऑब्जर्वेबल जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट। किसी भी एक्सटर्नल मीन्स बाहर, जहाँ अंदर के एनवायरमेंट में कोई भी अगर चेंज हो रहा है जिसे हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिसे डिटेक्ट कर पाते हैं, इज कॉल्ड द स्टिमुलस। Okay, so now let's start with the reflex arc. तो रिफ्लेक्स आर्क में हमारे पास है ये जो क्वेश्चन है ना, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड मेंशन हियर। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, इस पे आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो किस फॉर्म में आएगा? सबसे पहले तो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक, आपको एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा और उसमें से कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे, राइट? आपको उन पॉइंट्स को मेंशन करना होगा कि इसके इस प्रोसेस के बाद क्या होने वाला है। अभी हम वही फ्लो चार्ट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, सो डोंट यू वरी। So reflex action is that pathway through which the impulse pass during the reflex action. रिफ्लेक्स सेक्शन के टाइम पर द पाथवे विच इज फॉलोड बाय पाथवे थ्रू विच nerve impulse pass during the reflex action. This is the pathway only. Okay, so reflex action and reflex arc, the name is very similar. जो action हो रहा है reflex action, उसमें जो pathway follow किया जाता है that is called as the reflex arc. तो अभी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले here we have हीट स्टिमुलस। यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसके ले रहे हैं? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक हीट स्टिमुलस सबसे पहले मिला एंड देन द इंफॉर्मेशन वाज पास टू रिसेप्टर। यहाँ पर रिसेप्टर क्या है? स्किन इज द रिसेप्टर हियर। रिसेप्टर से कहां पर जाएगा ये? स्पाइनल ऑर्गन। स्पाइनल ऑर्गन बेसिकली द स्पाइनल कोड इन दिस केस, राइट? स्पाइनल ऑर्गन के बाद ये कहां पर जाएगा? इट विल मूव टू इफेक्टर ऑर्गन, especially the muscles, and then it will give the response। और ये response देगा and response क्या होगा? Response will be in the form of withdrawal of hand। तो इसमें क्या है? सबसे पहले एक गर्म बर्तन था जो उसे टच कर लिया, राइट? और उससे जो है एक सिग्नल गया, कहां पर गया? सबसे पहले रिसेप्टर के पास। और यहाँ पर रिसेप्टर क्या था? रिसेप्टर वॉज द स्किन, राइट? और स्किन के बाद ये कहां पर गया? जो हमारा सिग्नल है इट गोज टू स्पाइनल ऑर्गन। स्पाइनल ऑर्गन तक कैसे गया? थ्रू दैट होल प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स, राइट? जो हमारा स्पाइनल ऑर्गन है हियर इन दिस केस इज स्पाइनल कोड, वहां से सिग्नल जो गया इफेक्टर ऑर्गन को, मींस मसल को। क्या सिग्नल गया? कि आप जो है अपना हाथ वहां से हटा लो, राइट? सो दिस वाज द रिस्पॉन्स। तो एक ऐसा जो आर्क है ये बन रहा होता है इन द फ्लो चार्ट। अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो सो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स हैं दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। The response we have are of three types. The first one is voluntary.
एज द नेम सजेस्ट कि अगर वॉलंटरी है इट मीन्स कि जो हम इच्छा से करते हैं, राइट। दीज आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होंगी? फोर ब्रेन। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? टॉकिंग, किसी से बात करना। ये आपकी खुद की वॉलंटियरिंग होगी, आप बात करना चाहती हो या नहीं, राइट। नेक्स्ट इज वॉकिंग, चलना, एक्सेट्रा। यहाँ पर आप राइटिंग लिख सकते हो, रीडिंग लिख सकते हो, राइट। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. So the very next we have is involuntary actions. Involuntary means जो आप खुद से नहीं कर रहे हो, but these are happening, right? These are to be happened. For example, these are controlled by midbrain and hindbrain. Midbrain and hindbrain. This is also called as hindbrain, right? So this is up to you which pronunciation you want to follow. And इसके examples क्या हैं? Heartbeat. आप हार्टबीट को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, राइट। यू कांट कंट्रोल इट बाय योरसेल्फ. इट इज नॉट योर वॉलंटरी रिएक्शन, इट इज इनवॉलंटरी रिएक्शन. And respiration, it is also a involuntary action. Okay. So the next we have is reflex action. The very third we have is reflex action. तो reflex action as we have already learned about. So reflex action हमारे पास क्या होते हैं? So reflex action are controlled by spinal cord. ये जो reflex action है, they have nothing to do with the brain. For example, withdrawal of hands on touching a hot object. Right? ओके, सो ये तो हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, कैसे कैसे हम. बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन चाहिए ही क्यों? हमारे पास वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन थे which were related to brain somehow. Then why we need these reflex actions? So let's have a look at that. कुछ एक्शन हमारे पास ऐसे होती हैं जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना, पिंच करना, जिन्हें एक्ट करने के लिए बहुत क्विकली एक्ट करना पड़ता है, जिनसे कुछ ऐसे हमारे पास स्टिमुली होते हैं जिनसे जिनके लिए हमें बहुत क्विकली जो है रिएक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है. अगर हम क्विकली टच नहीं, हमने जो हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हुआ है, अगर हम क्विकली वहां से अपना हाथ नहीं हटाते हैं, दैट कैन कॉज बर्निंग ऑफ आवर हैंड, राइट. सो वहां पर हमें क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ता है, अदरवाइज आवर बॉडी कैन बी हार्म्ड. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन. सो अगर हम लिखें, सो इन सम सिचुएशंस we need to act quickly, otherwise our body would be harmed. Second point, here the impulse is generated
तो यहाँ पर जो इम्पल्स है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कोड rather than from the brain, right? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो हमारी इम्पल्स जनरेट होगी और जो हमने फ्लो चार्ट भी पढ़ा है वहां पर जो ऑर्गन हम पढ़ रहे थे, राइट? द स्पाइनल ऑर्गन दैट वाज द स्पाइनल कोड। वहां पर ब्रेन से कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होती है बिकॉज इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। So time for taking action is reduced, which save us from injury. Okay, so this was all about the reflex section. Now we are going to start with a new topic, that is the human nervous system. This is going to be very interesting topic as we are going to learn about humans now. So you all can relate this very topic with your own self, and this topic is very easy also. So you are going to enjoy in this topic. Okay, so हमारे पास जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है we have, let's learn it in the form of a flowchart. Okay, so here we have human nervous system. Let's go to the next slide first. We have human nervous system. Human nervous system is further divided into, or we can say there are two further division of human nervous system. The first one is CNS, that is central nervous system. CNS, central nervous system. Here we can write that it is central nervous system, and it is PNS, that is peripheral nervous system. Right?
तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में what we have is, here we have brain and spinal cord. एंड जो हमारे पास पीएनएस है, पीएनएस में वी हैव cranial nerves and spinal nerves. Here we have cranial nerves, spinal nerves. Okay. So this is the basic flow chart of the human nervous system. अगर आपको कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन जरूर करेंगे दैट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से हमारे पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है उसके, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. whereas the peripheral nervous system consists of the cranial nerves and spinal nerves. ये जो cranial nerves हैं, these are the nerves which arises from brain. Whereas spinal nerves are the nerves which arises from spinal cord. Right?